इसको जिस तरह मनोज लोगो शूट भी कर रहे हैं वो भी काफ़ी अलग है. आई एम रियली एक्साइटेड कि रोज़ घर से जब निकलता हूँ तो एक एक्साइटमेंट से निकलता हूँ कि आज कुछ नया करने जा रहा हूँ. Thank you so much for coming here. Banjo is an exciting film for me, and Ravi and me go a long way. We did a film called Balak Balak together. He directed and we produced it together, and I'm so glad that he took the right step and right move to make a Hindi film. I've been after him for a while to make a Hindi film. I'm glad that he chose Banjo as his subject, his topic, and I'm very excited to be part of this film with Nargis, of course, and Krishika. Krishika and me have worked a lot of films together with Eros, but Krishika has this amazing eye for unique movies and all those films that are unique and yet popular and commercially successful. So I'm so glad that she asked me to do this film, and thank you, Krishika, for this opportunity. Thank you, Ravi, for this opportunity. Like Krishika said, Banjo is about these banjo boys who think that banjo is perceived as a borrowed art, as an art that you always play someone else's music. And it's used during festivals and celebrations, and it's about these guys who think that they're used as decorations, that they're used during festivals and then forgotten about it. They enjoy that moment and then they are forgotten. So it's about these boys who think that time has come for them to play for respect. I play this character called Tarat, and he has a line which he says ke zindagi do choice deti hai, bajao ya bajao. I do want to say that I'm so happy that you guys asked me to be a part of this film. When I heard the story, it was one of those stories that really touches your heart, and you feel so much for it. So I'm super happy to be a part of this. Of course, to work with Ritesh is great because he's a fantastic actor and a fantastic human being, and that's very important to me, at least. I really love my character. Yes, I play a NRI coming from America, which I could totally understand all the issues that she goes through. So I feel very close to the character. So far it's been a lot of fun remembering all the things that happened to me when arriving to Mumbai. And I think another thing that really makes me happy is that I'm learning about the Maharashtrian culture, the food, the music, the people. I'm in an area which I didn't really ever get to see. So for me, discovering new things is even most of them have never come here before. Really? Well, I don't know. I think everyone. No, what are you joking? Stop playing. Yeah, for me, so this entire film and the people working on it and where we're at is amazing. So thank you for having me. Hi, namaskar. There is a line in this film basically कि जिंदगी दो choice देती है. तो for me also actually वो उतना ही सही है कि जिंदगी दो choice देती है. छोटे छोटे काम करते हुए हो या एक ही कुछ बड़ा काम करो. I think for me Banjo is that movie. Last 3 or 4 years I was struggling with this idea to do a film on the street musicians. There are several kind of street musicians across India, in fact across globe. And if somebody encourage them to compose their own tune, I think that will be a great thing. And this story is about composing your own tune. हम इसका कहते हैं कि पेट के लिए बजाना या दिल के लिए बजाना, आप चॉइस करो.
तो जो म्यूजिशियंस खाली पेट के लिए बजाते हैं, अगर उन्होंने उनको किसने कहा कि आप दिल से बजाने के लिए शुरू करो आपका इंस्ट्रूमेंट, और उनको किसने समझाया कि आप भी म्यूजिशियन हो तो क्या हो सकता है, इसकी ये स्टोरी है. आई रियली थैंक इवास बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट हिंदी फिल्म एंड दे गिव मी अ चांस, दे गिव मी सपोर्ट, अ कंप्लीट सपोर्ट. यू कैन सी दिस शिप जो हमने यहाँ बनाई है इज़ रियली इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट समथिंग ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे ट्रक नहीं आते, यहाँ पे टेम्पोज नहीं आते. ये जो आप पूरा शिप देख रहे हो, ये जो पूरा सामान है वो बाय सी यहाँ पे आया हुआ है. हम आप जहाँ बैठे हैं आप एक्चुअली पानी में बैठे हैं. दिस इज अ सीमेंट प्लेटफॉर्म, दिस इज अ वुड थिंग, एंड आई थिंक आई एम really thank Shekhar Movi to doing this fantastic art direction for this. नहीं, सबसे पहले जहाँ तक लुक की बात आती थी, जब पहले डिस्कशन हुआ था, तो रवि की एक ख्वाहिश थी कि कुछ अलग करें, जो मेरा रेगुलर लुक होता है उससे कुछ अलग मैं दिखूं. और हालांकि ये जो है वो स्लम में रहता है, पर इसकी अपनी एक स्टाइल है. एंड आई नो कृषिका इंसिस्टेड दैट यू हैव टू हैव लॉन्ग हेयर. हमने फिल्म एक्चुअली पुश भी की. ये फिल्म अक्टूबर में शुरू होने वाली थी, पर उस वक्त हाउसफुल का स्केड्यूल चल रहा था. आई डिडंट हैव टाइम टू ग्रो हेयर और हैव इनफ हेयर टू स्टाइल माई हेयर इन अ पर्टिकुलर वे. सो येस, ये जो लुक है इसका पूरा क्रेडिट श्रेय कृषिका और रवि को जाता है, बिकॉज दे इंसिस्टेड दैट आई शुड हैव लॉन्गर हेयर एंड आई होप इट लुक्स डिसेंट इवेंचुअली. पर येस, कुछ अलग करने की कोशिश है क्योंकि किरदार भी अलग है. और एंड इसको जिस तरह मनोज लोगो शूट भी कर रहे हैं वो भी काफ़ी अलग है. आई एम रियली एक्साइटेड कि रोज़ घर से जब निकलता हूँ तो एक एक्साइटमेंट से निकलता हूँ कि आज कुछ नया करने जा रहा हूँ. एंड आई थिंक दैट एक्साइटमेंट कीप्स मी अलाइव एवरी डे टू कम ऑन सेट्स. एंड नरगिस, आई थिंक दिस, हम में से कोई भी रिकास्ट हो सकता है फिल्म में, लेकिन नरगिस नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ किरदार होते हैं जो खास उन्हीं के लिए बने होते हैं. और क्योंकि इट्स टेलर मेड फॉर हर एंड शी फिट्स इट परफेक्टली. आई थिंक शी इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब. उनको बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू नो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट रवि. रवि बोलते कि अच्छा कोई इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड है, डोंट बॉदर, यू कम फ्रॉम अमेरिका, सो यू स्पीक द वे यू आर कंफर्टेबल. बहुत बार एक्टर्स को एडजस्ट करना पड़ता है डायरेक्टर्स के लिए, बट देयर इज अ डायरेक्टर हु इज रेडी टू एडजस्ट टू द एक्टर बिकॉज ही सेज you understand your perspective better, so let's work together. I think that's an amazing quality to have as an actor, and she's wonderful. She's fun, she's cracked, but we love her. हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं बचपन में बजाता था हवाइन गिटार. नहीं वैसे नहीं, वो पैर पे होता है, वो एक स्टील रॉड होता है, उससे बजाने पड़ती है वो गिटार, तो मैंने सीखी थी. और बैंजो भी मैं बजा लेता हूँ. I'm from New York. The character's from New York. I've come to India. I identify with her very much. That's what I can say. There's many similarities. You know, as an actor, you wait for an opportunity to do something different. Not that I'm complaining with the stuff that I'm doing, you know, be it Houseful or the films that I've done or I'm doing. But there comes a producer like Ekta Kapoor who says, you know, I want you to play a villain. And you say, why not? Let's do it. So that went well. And later, I think it's Ravi and Krishika who thought of me to play this character of Banjo. And I have, I would say, I have said Marathi or spoken Marathi in many films, fleetingly. But an authentic Maharashtrian character that I've played is in this film. So yes, it's rooted, it's typical Mumbai character, Mumbaiya as you call him, and the understanding that Ravi has about the space, the characters, and the zone that we are in, it's incredible. So yes, I'm really excited about this film and this character to play.
Thank you. फिलहाल इंजरी ठीक है, आइसिंग कर रहा हूँ. Unfortunately, I had to cancel one day of Banjo's shoot immediately after I was injured, but I want to thank the producer and the director to have adjusted to that. And I'm back. I'm icing my injured part of my body, the hamstring, and back on the game.